अस्सलामुअलैकुम। तो क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 4 एम्स बिटवीन 118 एंड 3। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व इस तरह करेंगे कि अब हमें पता है कि हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 18 से लेके 3 तक हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी। तो वो है फोर अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि 4 मीन्स हमारे पास बनने चाहिए, यानी कि M1 M2 M3 एंड M4। तो ये बन रहे हैं। सो वी हैव द आंसर इज, हमारे पास जो है ना 18 और 3 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 18 M1 M2 M3 M4 3। तो फर्स्ट टर्म इज 18 and n is 6 because 1 2 3 4 5 6 and t6 is equal to 3. Okay, so we know that the formula of arithmetic mean Tn is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, so Tn is we know that T6 is equal to a is 18 plus n 6 minus 1 d. T6 बराबर है 18, T6 बराबर है 3 के 18 प्लस 6 माइनस 1 6 माइनस 1 d। 3 is equal to 18 plus 6 d minus d। 3 is equal to 18 plus 6d plus minus 5d. So we can write this equation, 3 minus 18 is equal to 5d. 3 minus 18 minus 15 is equal to 5d. 5 1 is 5, 5 3 is 15. So d is equal to -3. So m1 is equal to, if we find m1 first term, so m1 is equal to a plus d. So we know that a is equal to 18 minus 3 plus minus -3. So answer is 15. And we can find m2. So m1 plus d. m1 is equal to 15 plus minus -3. So 15 minus 3 is equal to 2, 12. m3 is equal to m2 plus d. So m2 is equal to 12 minus 3. 12 minus 3 is equal to 9. And m4
is equal to M3 plus D. 9 minus 3 to it is 6. So our sequence is M1, M2 and M3 is 15, 12, 9, 6 are for arithmetic mean. Okay.